Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Today we are here with a few cheeky sentences. वो sentences जो बाज़ोकात हमें बहुत मुश्किल लगते हैं कि how to translate those sentences into English. तो for example हमारे पास एक sentence है छुट्टी हो गई. तो students usually ask such questions कि छुट्टी हो गई, इसको किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो छुट्टी के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस छुट्टी हो गई, इट्स पैकअप टाइम, और इट्स टाइम टू पैकअप. यानी हम छुट्टी के लिए पैकअप का वर्ड यूज़ करते हैं. इसी तरह एक और ट्रांसलेशन के मुताबिक इन सम ऑफ द कंट्रीज दिस सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड लाइक इट इज़ प्ले टाइम. We can also say it is play time. छुट्टी हो गई. It is time to go home. छुट्टी हो गई. Another example is the last bill has gone, or the last bill has rung. So all these sentences mean छुट्टी हो गई. इसी तरह it's off time, we can also say it's off time. It is off time. Well, तो इसके साथ साथ एक और सेंटेंस है कि it is time to go home के साथ it is time to leave. Instead of go home, we can also say it is time to leave. Acha, another sentence, another verb is there. It is time to leave. It is time to close. It is time to close. But the best sentence is here. It is pack up time, or it is time to pack up. That is the best translation for छुट्टी हो गई. अब आते हैं एक और सेंटेंस की तरफ जिसमें बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिजली आ गई. हाउ टू से लाइट हैज़ कम, और द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ कम, और व्हाट. सो लेट्स सी. बिजली आ गई, बिजली आ गई. आम तौर पर वी हैव हर्ड दिस सेंटेंस के लोग कहते हैं द लाइट हैज़ कम. जुमला बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस भी ओके है कि द लाइट हैज़ कम, वी कैन से. बट बेटर टू से द पावर इज बैक. द पावर is back, or the light, or we can also say electricity. The electricity is back. लेकिन बेटर ये है, इन सारे सेंटेंसेस से बेटर ये है कि हम एक फ्रेज इस्तेमाल करें कि लाइट बैक, or we can also say electricity back. So that will be short form, a better form. Or the light is back, the light has come back, we can also say. But better, the power is back. That is the best sentence, right? Or the light is back. बिजली आ गई. अच्छा, बिजली चली गई, इसके लिए फिर another sentence will be there.
Well, we can also say the light is on again. The light is on again. We can also say that sentence. अब बिजली चली गई और बिजली चली गई है. So we can say the power is gone. और यहाँ पर gone as an adjective आया है, right, not a verb. और the power has gone यहाँ पर as a verb आया है. और the light or power went off. So अगर हम off का word use करें, the power is gone, the power has gone off, that will be a better way. अगर न भी हो तो भी सही है. और the light went off, the power went off. So such sentences we can use for बिजली चली गई, or better, there is no light. There is no light. So these are the different translation of बिजली आ गई, बिजली चली गई, and छुट्टी हो गई. So that's it from here.